Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis where actually we discuss the Hindu analysis. Okay, so if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. So today is Wednesday, 28th June, and here we are here with the Hindu analysis of 28th June. ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है, just write in the comments, yes sir, you're audible. Am I audible, guys? Okay, yes. So आज की जो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द फर्स्ट आर्टिकल इज एक्चुअली अबाउट इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अफर्म्स पीएम मोदी. So this is an important article, and the next article is about last Chinese reporter leaves India after visa extension denied. So these are the two important articles that we will be discussing today. अगर मेरी आवाज आ रही है, just write in the comments, yes sir, you're audible. Okay, fine. So let's start. With this one, देखो, if you are my paid batch student, I have discussed in detail about uniform civil code. Yes, that criminal code in India is uniform, but civil code in India is different. So actually that is what is being talked about here. Okay, so that is why you should be knowing about it now. Yes, good morning everyone, good morning guys. Okay, now there's a question for you, since uniform civil code is being talked about. There's a question for you. The first question says, in which part of the constitution the idea of uniform civil code is mentioned? Your options are fundamental rights, directive principle of state policy, fundamental duties, union and its territories. Your time starts now. Bataiye, what is the right answer to this question? See, why I'm asking this question, I have already taught this in paid classes. तो मैंने paid class में already पढ़ाया हुआ है. I have already taught in the paid classes. So I'm expecting you all to answer this question. The idea of uniform civil code, in which part it is mentioned? Okay. Yes, it is mentioned in DPSP. वो कौन सा नंबर पार्ट का है आपको बताना है. Which part it is? Part 1, 2, 3, 4, 5. So fundamental right actually is mentioned in part 3. DPSP is actually in part 4. है ना? Fundamental duties in part 4A. Union and its territories in part 1. है ना? I have discussed these things and all. है ना? So here the right answer is directive principle of a state policy में uniform civil code mentioned है. So B is the right answer to this question. The next one is, which article of the constitution talks about uniform civil code? Your options are article 47, article 44, article 39 capital A, article 48. What is the right answer to this question? Uniform civil code कौन से article में mentioned है? Yes. कुछ लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया. वेरी गुड. जोया खान, स्वाति ठाकुर, आदित्य वाजपेयी. वेरी गुड. You all have answered it correctly. I'm happy that you are studying it well. These things I have taught in the paid classes. मैंने detail में पढ़ाया है. Fundamental rights I have taught, directive principle of state policy, fundamental duties, the constitution and all. I have taught these things. So yes, the right answer is option 2, or B is the right answer to this question. Zoya Khan, Priya Chavan, Aditya Vajpayee, Karima Chaudhary, Tulika, Alok Pratap Singh. B is the right answer. You can see it here. It says uniform civil code for the citizens. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. Okay, now there is another question which I have already taught in the paid classes, is about this. Which of the following is justiciable in a court of law? Your options are fundamental rights, directive principle of state policy, fundamental duties, all of the above. Your time starts now. Okay. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई स्टिल रिमेंबर आई हैव टॉट जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये सब टर्म मैंने समझाया था ये तीनों के कॉन्टेक्स्ट में.
what we call it as, इसी को enforceable भी लिखते हैं, है ना? What is the, can anyone write in the live chat? What is the meaning of justiciable in a court of law? इसका मतलब क्या होता है? Anyone? मैंने पढ़ाया है, these things I have already taught. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. Everyone please press the like button. People are saying 4, all of the above. Yes, I think Zoya Khan is right. Only one correct answer I have seen. Justiciable in a court of law. Are you sure directive principle of state policy is justiciable? मैंने पढ़ाया है, I have taught in the paid session. If the government does not implement it, can you challenge it in a court of law? No. Fundamental duties are justiciable in nature. If a citizen do not follow it, can it be challenged? No. These option 2 and option 3 are not justiciable. Only fundamental rights are justiciable in nature. So A is the right answer to this question. Zoya Khan was right. Jyoti is also right. Yes. Yes, Karima Chaudhary right. हाँ. Param Khoj. So only one is the right answer to this question. Yes. जैसे ये DPSP है, मैंने बताया भी था. तो अगर if the government does not implement it, you cannot go to the court. है ना? These, I mean, I have explained in detail in the paid classes. तो जो paid वाले student at least वो तो बता दिए होते, मतलब they should have, please go and revise it. Whatever I have taught in the paid sessions or in the free session, please revise it. Revision is very important, है ना? Because ऐसा नहीं हो कि पढ़ा हुआ question गलत हो जाए, है ना? Yes, that is what you should be knowing it. Okay. On first page, there was another article talking about last Chinese reporter leaves India after visa extension denied. Okay, so I hope you are aware of this thing. काफी दिन से ये चल रहा था कि actually the Chinese reporter, journalist, Xinhua is actually a news agency of China. News agency of China. And from China, he was working in Delhi. So he left back, I mean, because there were actually, now there are no Chinese journalists in India now. है ना? So India asked 3 Xinhua reporters to leave. So Xinhua मतलब Chinese agency, उसके reporters को कहा कि आप वापस जाओ, go back to the China. Okay, so that is what is being mentioned. India begins issuing short, देखो सब लिखा है 2016 में India asked 3 Xinhua reporters to leave. Then 2017 this happened. Then China refuses to renew visas for Indian reporters. तो चाइना ने भी इंडिया के रिपोर्टर्स को वीजा नहीं दिया. Okay, so these things happen and all. Then a Chinese media presence dips to 2. Beijing asked 2 Indian correspondents to leave. Then China asked Indian journalists to leave. So ये सब past में होता रहा है, उसी को explain किया जा रहा है. Yes, that is what is being talked about here. So there are no Chinese journalists now. The last remaining journalist of Xinhua news agency left New Delhi 1 week ago after being denied a visa extension. So the last journalist था जो कि दिल्ली में था, he left back to China because India did not extend the visa for that. So that journalist was a part of Xinhua news agency. Okay, you should be knowing it. This marks the first instance of there being no Chinese journalists in India since the normalization of relation in 1980s. तो 1980s के बाद शायद ये पहली बार है, since 1980s. This is the first time we are seeing that there are no Chinese journalists in India. Okay, there's one Indian reporter from PTI who remains in Beijing, but there is one. PTI is a news agency, Press Trust of India. It's a news agency. Okay, so one actually reporter from India, he is actually working in Beijing. यहाँ पे Beijing ना. So he is there. One PTI reporter is in China. Okay, according to this the Hindu article. Chinese Foreign Ministry on June 12 said the reporter was still working and living normally in China. So according to China, the Indian reporter, the PTI reporter, is normally working. I mean, he's working and all. But the China has said that if might have to take countermeasures and all. मतलब China has said कि it might expel him and all. ठीक है. So that was in the news. तो यही सब है. तो just have an idea about that. Okay, let's move on further. First page पे एक और article, the harassment of WSJ reporter is unacceptable, says White House. देखो WSJ stands for Wall Street Journal. So there's a journalist, Sabrina Siddiqui. She's a journalist of Wall Street Journal. So she was in the news for asking questions and all from PM when PM Modi visited US and all. So there were some actually actually Twitter trending etc. against her. तो उतना detail नहीं जाना है.
but just White House said ki it should not have happened and all, the harassment of WSJ reporter. Okay, now since we are talking about White House, the question to banta hai na ki what is White House? It comes in the news again and again. Okay, so your options are US Parliament, US President Office, US Secretary of State Office, US Defense Secretary Office. Your time starts now. आपको ये बताना है कि व्हाइट हाउस कहते किसको है, मतलब क्या है इसमें से कौन सी बात सही है. What is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Everyone please press the like button. Yes, the right answer is अरे ये तो बहुत फेमस है, इसमें इतना टाइम क्यों लेते हो. यूएस पार्लियामेंट को हम लोग कांग्रेस कहते हैं, ठीक है. So here the right answer is option B. US President Office भी है, US President House भी है, दोनों है, मतलब प्रेसिडेंट का घर भी एक तरह से, दोनों. So B is the right answer. Yes, परम खोज, प्रिया चवन, आदित्य, आलोक, ज्योति, रंजना, गरिमा, जोया, you all are right. B is the right answer to this question. So this is White House. White House मतलब official residence भी कह लो, official residence of president, plus office भी यही कहा जाता है, office of president, US president, ठीक है, यही व्हाइट हाउस. ओके, यस. तो आप देख सकते हो ना, इसमें लिखा हुआ इफ यू गो एंड रीड विकिपीडिया एंड ऑल. सो सिंस 1800, बहुत पुराना है, जॉन एडम्स के जमाने से दिस, सो यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन, यस, यूएस पार्लियामेंट कांग्रेस को कांग्रेस कहते हैं, ये जोया खान करेक्ट. ना फर्स्ट पेज में एक आर्टिकल थी, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट फॉर मनरेगा टू अगस्त 31. पहले पे क्वेश्चन का आंसर करो. MG Narega या MG Narega guarantees right to work in rural areas for how many days in a year? Your options are 125 days, 225 days, 250 days, 100 days. What is the right answer to this question? बताओ. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल Rural Employment Guarantee Act, Guarantee Act. So this is to promote rural employment. This is actually for unskilled worker. Okay, yes, the right answer is option D. 100 days is the right answer to this question. ठीक है. अब देखो उसमें ये है, हाँ, तो 100 डेज का गारंटी होता है आउट ऑफ 365 डेज, आई मीन 1 ईयर, है ना, इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ रूरल एरियाज में, प्लस अनस्किल्ड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. सो इसमें क्या है कि जो पेमेंट होगा, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द मैंडेटरी पेमेंट फॉर मनरेगा वाया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम. नाउ इसमें क्या होगा कि आधार विल बी लिंक्ड, है ना. सो जैसे कोई बंदा है XYZ, सो हिज और हर आधार विल बी लिंक्ड, है ना, तो उसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मनी एंड ऑल, है ना. सो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मींस डिजिटल मे बी इन हिज और हर बैंक अकाउंट when the bank account is linked with Aadhaar and all. So the last date has been extended till 31st August. The ministry announced this on social media, though it did not share the order in public and all. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको 31st अगस्त तक ये कंप्लीट कर लेना है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, राइट. सो मीन्स की पेमेंट जो होगा, द सैलरीज विल बी डिजिटली सेंट and with the help of Aadhaar, if the bank account is linked with Aadhaar and all. इस आपको पता होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आजकल काफी न्यूज में रहता है ना. फिर इसमें कुछ न्यूज था कि द हिंदू हैड रिपोर्टेड सम इंसिडेंट्स वेयर एक्चुअली हाई डिलीशन रेट ऑफ जॉब कार्ड्स विद सेवरल बेनिफिशियरी एक्सक्लूडेड ऑफ मिसमैच बिटवीन आधार एंड जॉब कार्ड डिटेल्स. तो बहुत बार क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, इससे इश्यूज आता है बिटवीन आधार कार्ड एंड जॉब कार्ड, ठीक है. मतलब जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है, सो द नेम ऑफ द स्पेलिंग हियर एंड हियर इज डिफरेंट, the residence or the address proof is different. So because of it actually sometimes the problem also gets created. तो इस सब के डिस्कस किया गया यहाँ पर. That is what it is being mentioned here. Okay, मनरेगा आप थोड़ा सा पढ़ लेना, and it guarantees 100 days of wage, है ना. So right to work. So now right to work will become a legal right. Right to work is a legal right now. ठीक है, that you should be knowing it. Okay, now before moving on guys, we are having CLAT 2024 comprehensive course, 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there, monthly magazines are also provided. So if you have any question, call on this number 95388 95678 पे call कर सकते हो.
Now, actually, this is, we are providing a 3-day free trial also. So download our app, go to CLAT section, and where actually you can register for the 3-day free trial also. Okay, now let's start with the editorial. 1, 2, 3, 4 editorial ये वाला discuss करते हैं. The tracing the arc of American exceptionism for India. So this has been written by a very famous foreign policy expert, Suhasini Haidar. Okay, so the growth of relationship between India and US is often traced from its nadir 25 years ago. देखो ये सब वर्ड लिखते हैं. नादिर मतलब क्या होता है? So एकदम decline in the relationship. देखो actually हुआ ये था. अच्छा पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, then I will explain it. First answer this question, then I will explain about this topic. है ना? The first successful nuclear bomb test was conducted by India in 1974 is called as what? Prithvi, Pokhran 2, Smiling Buddha, Surya. What is the right answer to this question? बताइए. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ guys, everyone. Yes, because ये question इस topic से linked है. ठीक है? That is why I am asking this question. और ये मैंने कई बार पढ़ाया भी है. Before the exam also, I taught this in my paid classes, है ना? And this came in the exam. Yes, the right answer is a smiling Buddha. इसको हम लोग पोखरान 1 कहते हैं, है ना? Yes. And this is Pokhran 2. So Pokhran 2 happened in 1998. The second nuclear test. The first one happened in actually 1974. So this is being talked about, है ना? Yes, C is the right answer. During Indira Gandhi time, yes, this one happened during Indira Gandhi time, and 1998 happened during Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee's time. Okay. Now, अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं. देखो what happened was when India conducted second nuclear test. इन ये वाले की बात कर रहे हैं. So the relationship between India and US was at the nadir. ठीक है. नादिर का मतलब होता है एकदम नीचे, extremely low. So India-US relationship was very low. है ना? यही बता रहे हैं. Okay. When US imposed sanctions against India and Pakistan. क्यों? Because 1998 मई में दोनों ने Pakistan and India both had conducted test. So US imposed sanction. Sanction मतलब आप समझ लो एक तरह से economic boycott. Economic boycott. है ना? Sanction मैंने कई बार बताया. There's a term called as embargo also. EMBARGO. This word is also mentioned. So embargo मतलब होता है कि the US said कि no one should be doing trade with India and Pakistan and all, because both the nations tested nuclear test in May 1998. Since then, the arc of relationship between India and America has grown year on year, some years more than etc. and all. लेकिन उसके बाद relationship improve हुआ है. Yes, so that is why I am making this type of graph. That after 1998 we started improving it, and one of the example is of 2005. Indo-US nuclear deal. Okay, that is what also being talked about. है ना? So and 3 Indian the box लिखा है 5 US president Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden. So these are the US president and these are the Indian prime ministers which came after that. Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, BM Modi. है ना? So that is what is being talked about. है ना? तो उसके बाद 1998 के बाद धीरे-धीरे इंप्रूव होना शुरू हुआ था. 1998 में तो नीचे चला गया था समझो relationship between India and US. Okay. Now, since we are talking about Pokhran 2, there is a question for you कि which operation it is related with. ठीक है. Your options are Operation X. Operation का नाम बताना क्या था? Operation X, Operation Shakti, Operation मेघदूत, Operation Polo. जो 1998 में पोखरान टेस्ट हुआ था, नहीं पोखरान 2, उसका नाम क्या था? What was the name of the operation? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Please press the like button. Okay, the right answer actually is B is the right answer. Yes, very good. Operation Shakti इसका नाम था. ठीक है. Yes, परम खोज, प्रिया चवन, ज्योति, जोया खान. हाँ, good. नहीं, ऑपरेशन मेघदूत नहीं होगा ये. This is related with Siachen. Operation Polo is related with Hyderabad. ठीक है. So here the right answer is B or 2 is the right answer to this question. अच्छा, ये ऑपरेशन शक्ति एक मिशन शक्ति भी था. ये दूसरा है. मिशन शक्ति 2019 में हुआ था. इसको भी फाइंड आउट करना ये क्या है. ठीक है. व्हाट इज मिशन शक्ति? ये एसैट टेस्ट हुआ था, एंटी सैटेलाइट टेस्ट. ठीक है.
by ISRO and all. तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ना, मिशन शक्ति क्या है, इट्स अ होमवर्क, go and find out about that. ऑपरेशन एक्स क्या चीज से रिलेटेड है प्लीज, आई एम अनेबल टू रिकॉल, आई थिंक अजमल कसाब्स डेथ और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, बट एक बार आप चेक कर लेना, जहां तक हमको याद आ रहा है इट इज रिलेटेड विद दैट. Here the right answer is B is the right answer to this question. Okay, yes. Okay, after his visit to Washington earlier this year, PM Modi meeting with Joe Biden. So yes, I hope you are aware PM Modi visited USA and all, है ना. They talked about transfer of technology. देखो TOT बहुत important चीज होती है nowadays, है ना. TOT मतलब क्या होता है? Transfer of technology. Like for example, if US is making very high advanced technology, and if we are working, doing some agreement, so that technology would come to India, है ना, इसको हम कहेंगे TOT. This is an agreement. MOU मतलब क्या हुआ? Memorandum of Understanding, मतलब sort of an agreement was signed between General Electric Aerospace and Hindustan Aeronautics Limited to produce fighter jets engines. ठीक है. So General Electronic US की कंपनी है, and HAL Hindustan Aeronautics Limited is Indian company famous for making planes, मतलब jets, है ना. ठीक है. तो इस दोनों ने अग्रीमेंट एक साइन किया है अभी रिसेंटली, बोथ हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर जेट इंजन्स, जो जेट्स आता है ना एयर फोर्स जेट्स, उसके इंजन्स बनाने के लिए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. ओके, यस. Now let's move on further. For India, the rapidly rising arc of tides has been seen in terms of shrugging off what PM Modi called the hesitation of history and all. मतलब ये है कि आफ्टर मैंने भी बताया भी कि in 1998 we reached the nadir, एकदम नीचे चले गए थे. Now we are actually improving it, and now means the relationship between India and US is actually moving since 1998 and all, है ना. So that is what is. अब इसमें देखो एक exceptionalism ये सब टर्म होता है, ये आपके काम का नियम है. These are slightly tougher words. I'm not going in detail what is American exceptionalism and all, because that's not important for you. तो इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ अभी. ठीक है. Now उतना डिटेल नहीं जाना है the political philosophy or not. Okay, so just have an idea about that. Now अब ये the author is talking about the 2005 Indo-US nuclear deal. ये बहुत फेमस हुआ था, इसको 123 agreement भी कहते हैं, है ना. This one, yes. George Bush was there and Manmohan Singh was the Prime Minister of India. So in 2005 it was signed, और जब 10 साल हुआ था 2015 में, so in 2015 actually, it was 10 years of Indo-US nuclear civil deal. Transformation of bilateral relationship is the real big change. ठीक है. So 10 साल हो गया था Indo-US nuclear deal को. अब इसमें क्या खास है? What is so special in Indo-US nuclear deal? Okay. अब इसको जानने के लिए first answer this question, then I will explain. When was a nuclear supplier group formed? Your options are 1974, 1991, 2005, 2001. What is the right answer to this question? बताओ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कब फॉर्म हुआ था? And why I'm asking this question? Because it has link with Indo-US nuclear deal. ठीक है. Okay. So it has some relation and all. That is why I'm asking. बताइए. सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Subscribe to our channel also. Please press the like button. So some people are saying option 3, some are saying option 1. Let's see who is right. So yes, Param Khoj and Garima Chaudhary is right. 1974 actually, to be very precise, actually हुआ ये था when 1974 India conducted nuclear test. First nuclear test when India conducted during Indira Gandhi time, जिसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. After that, in response to that, nuclear supply group was formed. देखो इसमें लिखा हुआ भी है. Nuclear supply group was founded in response to India's nuclear test in May 1974. First met in November 1975. Okay, so these are the members. The green wale members. This India is not a member right now, but other countries are actually members. Russia है, USA, Canada है and all. Okay, Australia है, New Zealand. So basically, देखो होता ये है कि if India is a part of NSG, then a lot of nuclear materials or can be traded, है ना. जब Indo-US nuclear deal हुआ in 2005, India got, मतलब India was not a part of NSG, India NSG का part नहीं है ना, but still India got a sort of exception or waiver so that US can do trade with India as far as nuclear energy is concerned. ठीक है. यही वजह था, मेन रीजन
दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था कि इंडिया गॉट अ सॉर्ट ऑफ अ वेवर where even if India is not a member of NSG, still India can do nuclear trade with USA and all. So that is why it was considered as very famous and all. ठीक है, उसी की बात हो रही है. Okay, so that is what is being talked about. एक बहुत famous treaty है, इसको पढ़ लीजिएगा जाके, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. आई थिंक 1967-68 में हुआ था. ठीक है, इसमें दो तरह के स्टेट्स बैन किए गए थे. वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स and this another is called as non-nuclear weapon states. ठीक है, so go and read about nuclear proliferation treaty NPT. That is also sometimes in the news. तो कुछ treaties है जो बहुत famous है. एक है nuclear proliferation treaty, एक है CTBT comprehensive test ban treaty, 1996 के आसपास का, ये 1968 के आसपास का है. ठीक है, so these two treaty, go and read it. इसमें ये पढ़ना कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, इसमें से which one India is a member of that or not. ठीक है, okay, so go and read it. NPT, nuclear non-proliferation treaty, and comprehensive test ban treaty. ठीक है, now there's a question for you. India is buying S-400 defense missile system from which country? US, Russia, France, Germany. ये पीछे फोटो भी लगी हुई है, यही है आपको S-400 है ना, S-400 ट्रम्प सिस्टम, ट्रम्प मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस तरह लिखते हैं. So we are buying this from which country? I'm waiting for the answers. Yes. बहुत कम लोग आंसर कर रहे हो, सबको आंसर करो यार, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. यस, प्रिया चवन, परम खोज, ज्योति, यू ऑल राइट. रशिया से जितने भी, देखो एक चीज याद रखना, जितने भी इस तरह का है ना, S-300, S-400, S-500, all are actually from Russia. ठीक है, so we have decided to buy S-400 from Russia. ठीक है, तो ये डिफेंस सिस्टम होता है ना, इसमें देखो मिसाइल लगाओ, पीछे फोटो भी लगा हुआ है यार, इतना आसान है ना. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. देखो S-400 मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है. नाउ देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज CATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट. नाउ इसमें ये था कि 3 नेशंस वेयर देयर, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. ओके, so if anyone is doing business with these 3 nations, it will have to face economic sanction. अगर कोई भी रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया से ट्रेड कर रहा है तो उसको फिर सैंक्शन झेलना पड़ेगा. So when India was supposed to buy S-400 from Russia, India might become the victim of CATSA, but fortunately we have got CATSA waiver. यहाँ पे भी हम लोग को एक तरह का एक्सेप्शन मिल गया है. Yes, so basically now we can buy S-400 from Russia without any problem from CATSA. इसको भी पढ़िएगा, this is very very important. CATSA, countering American adversaries through sanction act, is very very important, so you should go and read it. ठीक है, okay. Now this is indeed exception given that Mr. Biden ordered sanction in 2022 on even German entities and all. अब देखो एक चीज और आपको जानना है कि we have got the actually sanction waiver, है ना. S-400 में we got waiver, but Germany did not got waiver in case of Nord Stream. ठीक है, ये मैं बताता हूं. पहले आप ये बताओ कि Nord Stream pipeline goes under which of the water body? Under which water body? Your options are North Sea, Baltic Sea, Azov Sea, Black Sea. Nord Stream pipeline जो है वो कौन से वाटर बॉडी के अंदर जाती है? इसमें गैस पाइपलाइन है ना, जिसमें से गैस जाता है. It has been very much in the news, especially when Russia-Ukraine war started and all. उसके बाद ये काफी न्यूज में आने लगा. सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Yes, the right answer is 2. Baltic Sea is the right answer. Yes, तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पर है, देखो here is Germany and here is Russia. ठीक है, तो रशिया से ऐसे करके गैस पाइपलाइन जाएगा. ठीक है, और ये वाला जो सी है इसको हम लोग कहते हैं बाल्टिक सी. ओके, ठीक है, so that you should be knowing it. Now, जब Germany, when Germany was kept on taking oil or natural gas from Russia, Germany faced sanction from US. कि why you are taking it, है ना? So that is what is being talked about. But India can buy S-400
फ्रॉम रशिया एंड इट हैज गॉट कैट्सा वेवर, ठीक है। तो ये बता रहे कि इंडिया को कैट्सा वेवर मिल गया यूएस की तरफ से, बट नॉट जर्मनी एंड ऑल, ठीक है। Okay, so that is what is being talked about. The exception have come without India accepting conditionalities on cutting ties with adversaries and all. ठीक है, so India is having good relationship with US without the condition of breaking ties with SCO nations and all, है ना। So we are having a relationship with SCO and all. That is what is being talked about. ठीक है, अब उसमें इतना डिटेल नहीं जाना है। They have gone in detail and all. अगर आप चाहो तो you can read about it, है ना। So you can read. देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने दिखाया ना, ये वाला डील, ठीक है। ये वाला जीईज मतलब जनरल इलेक्ट्रिक, है ना, जो कि यूएस की कंपनी है ना। हाल डील, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दोनों मिलके जेट्स का इंजन बनाएंगे विच विल यूज्ड इन इंडियाज तेजस, है ना। लाइट कॉम्बैट एलसीए लिखा ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इन दिस एक्चुअली जीईज इंजन, जीई प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल मेक मैन्युफैक्चर एन इंजन विच विल बी यूज्ड इन तेजस। ये है तेजस, दिखाते हैं ये दिस वन, ठीक है। This has been manufactured by HAL, Hindustan Aeronautics Limited. ये भी CLAT का क्वेश्चन है 2020 का। That which company, Indian company, is responsible for making jets and all? So HAL is the right answer. You should be knowing it. ठीक है, jet engine ensures 80% technology transfer to HAL first engine in 3 years, है ना। तो इस तरह की भी आर्टिकल आ रही है आजकल, है ना। ये सब इंजन है, देखो बड़ा बड़ा है। So these are engines of jets, ठीक है। ओके, तो जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ अग्रीमेंट साइन किया गया है। सो लेट्स सी इसको और थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा बिकॉज ये सब न्यूज में। ओके, द नेक्स्ट साइड में जो आर्टिकल था, इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस एंटर्ड अ न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। अगेन सेम चीज है, देखो जनरल इलेक्ट्रिक्स का वही बात हो रही है कि वी हैव डन एन अग्रीमेंट। जनरल इलेक्ट्रिक्स और हाल अग्रीमेंट की बात हुई है। जनरल इलेक्ट्रिक्स ऑफ यूएस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ इंडिया, दे हैव डन एन अग्रीमेंट फॉर मेकिंग इंजन्स ऑफ तेजस। फिर अगेन इट्स बीन टॉक्ड अबाउट दिस प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन्स। ये वाला ड्रोन है, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था, जनरल एटॉमिक्स का बनाया हुआ है ना। सो दिस ड्रोन, देन इन द पास्ट वी हैव बॉट अदर थिंग्स, है ना, लाइक AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर, C-30, 130, C-17 ग्लोब मास्टर। देखो ये वाला, ये C-130 है, ये C-17 है। सो C-130 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन ऑफ यूएस एंड C-17 इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग। ये दोनों यूएस कंपनी है। अगर आपको याद होगा शायद जब ऑपरेशन कावेरी हो रहा था, when we were bringing Indians from Sudan back, we used C-130 and C-17, याद है? How many of you remember that? ये दोनों यूएस की प्लेन जो कि हम लोगों ने खरीदा है, we have bought it from US. These two planes were used in Operation Kaveri when I was teaching about that, bringing Indians back from Sudan. Yes, you remember? These two were used. तो ठीक है, तो ये दोनों यूएस से वी हैव बॉट। ये बहुत बड़ी प्लेन होती है, यहाँ पे फोटो में छोटा लग रहा है, बहुत ह्यूज होती है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल प्लेन, इट्स वेरी ह्यूज। आई मीन a lot of humans can sit inside it. बहुत सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। That is the main thing about it. These two, है ना। Then we have got AH-64E Apache helicopters, CH-47 Chinook, ये सब हेलीकॉप्टर का नाम है, Chinook वगैरह सब हेलीकॉप्टर होते हैं, ठीक है। Then MH-60R हेलीकॉप्टर, है ना। तो देखो ये सब हेलीकॉप्टर है। AH-64E अपाची, अपाची तो एक हेलीकॉप्टर का वर्जन होता है, अब वो मोटरसाइकिल का ही नाम है। अपाची इज आल्सो अ बाइक इन इंडिया, बट एक्चुअली द ओरिजिनली इट इज एट्रीब्यूटेड टू हेलीकॉप्टर, है ना, उसी से नाम निकला है। हाँ, इसके अंदर ट्रक भी जा सकती है। यस, somebody has written, इसके ये इतना बड़ा साइज में होता है कि इसके अंदर ट्रक चली जाती है। यस, यू आर राइट, दिस इज वेरी ह्यूज इन साइज। हाँ, अगर आपने इमेजेस वगैरह देखा होगा तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, नॉर्मल प्लेन के मुकाबले दीज आर वेरी ह्यूज प्लेन्स, राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि इंडिया ने यूएस से ये सब डील किया है। फिर एक अभी रिसेंटली कोप इंडिया 2023 ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज हुआ था इंडो और यूएस के बीच, है ना। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये सब की बात हो रही है, इसको आप पढ़ लेना, यू कैन रीड अबाउट इट। पे हिट टू रिसर्जेंस इन मिलिटेंसी इन राजौरी एंड पूंछ। अब देखो, आई हैव टॉट इट इन द पेड क्लासेस एंड ऑल कि LOC, LAC ये सब मैंने पढ़ाया है। Please read LOC and LAC in detail. I have taught in the paid classes. Line of control, line of actual control, ये सब मैंने पढ़ाया है। Now the author is talking about, तो ये वाला रीजन को हम जूम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे श्रीनगर आपको मिलेगा, तो यहाँ पे श्रीनगर है, the capital of Jammu Kashmir. Baramulla is there, Poonch is there. Author is talking about Poonch and Rajouri. ये दो के बारे में खास ये बता रहे हैं। यहाँ पे श्रीनगर है कैपिटल, ओके।
So the author is talking about that and all, the militancy and all in this region. Okay, that is what is being talked about. LOC मैंने बताया है, I have taught in the paid classes LOC है ना, so आपको पता होना चाहिए यहाँ से कैसे LOC गुजरता होगा, आप देख लेना. LOC and LAC, please read it. Okay, and third one is McMahon line. If you are my paid batch student, good, watch my classes. If not, at least read these terms. ठीक है, LOC, LAC, McMahon line ये पढ़ के जाइएगा. These are important. It comes in the news. ठीक है, so that is what is being talked about. ठीक है. So he is going in detail in history about the insurgency in Rajouri and Poonch region. ये Rajouri और Poonch region में. Okay, that is what he is talking about. Then he's ये वाला operation का नाम याद रखना. Operation Sarp Vinash of 2022 actually was a counter-insurgency operation. Actually, Operation Sarp Vinash launched in this region. It estimatedly killed 65-70 terrorists and all. That is what is being mentioned here. Okay. Then he's talking about a community there, Gurjar Bakarwal, a Muslim community there, which actually has supported Indian Army in this region. Indian Army saw the first Muslim Village Defense Committee being set up. Gurjar Bakarwal's support to Indian state. So basically he's saying that Gurjar Bakarwal's community helped Indian government in fighting counter-insurgency and all. So he's giving some examples. तो अब इतना example वगैरह आप इतना detail नहीं जाना है, but just have a basic idea. देखो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए. वही मैं बता रहा हूँ अगेन. देखो यहाँ पे LAC की बात हो रही है, LOC, LAC, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. These things has to be crystal clear. McMahon line है ना. So these things you should be knowing it. Now model for quality and inclusive education. देखो quality education समझते हो, मतलब top class education. Inclusive मतलब which include everyone है ना. जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, means include everyone, the vulnerables, the weaker section, the poor, SC, ST, women, minorities, everyone. That is called as inclusive. मतलब the idea of social justice is to ensure that the poorest of the poor, the weaker of the weaker should also get education. इसको हम लोग inclusive education term use करते हैं. So the author is talking about an IRF ranking which actually showed IIT Madras at rank 1 in both engineering category and overall category. So the author is praising the Tamil Nadu and all higher education कि बहुत अच्छा है ना. So while when an IRF ranking is done, which is released by Ministry of Education, Ministry of Education and IRF ranking निकालती है ना. तो when an IRF ranking was done, overall ranking में IIT Madras rank 1 था है ना, और इंजीनियरिंग के सेक्शन में भी है ना. सो टीचिंग, लर्निंग रिसोर्स, ग्रेजुएशन आउटकम एटसेट्रा, ये सब चीज को देखा जाता है पैरामीटर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग एन IRF रैंकिंग. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक है, अब इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट इट कि द तमिलनाडु हैज लार्जेस्ट शेयर एंड ऑल. सो बेसिकली ही इज एक्चुअली प्रेजिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तो एन IRF रैंकिंग में तमिलनाडु का काफी बड़ा हिस्सा है ना. सो तमिलनाडु हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड ऑल. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक है, तो अब इतना परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है. यू कैन नॉट रिमेंबर दिस परसेंटेज, बट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट. दैट्स इट है ना. ओके, फिर एक नीचे में आर्टिकल थी, रिटायर्ड मेन इन सिटीज हैव मोस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी. देखो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, बहुत तरह के लिटरेसी होता है. देखो एक जो होता है हम लोग कहते हैं लिटरेसी नॉर्मल, एक कहते हैं डिजिटल लिटरेसी. मतलब डिजिटल लिटरेसी मींस वेर यू नो हाउ टू हैंडल स्मार्टफोन्स एंड ऑल. फाइनेंशियल लिटरेसी मींस वेदर यू नो हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी. आपके पास पैसा आ गया, आपको पता है कि नहीं कैसे खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, राइट. हाँ, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड. तो वो बता रहे हैं कि जितने सीनियर लोग हैं, रिटायर्ड मैन है, दे हैव मोर फाइनेंशियल लिटरेसी. उनको ज्यादा समझ है हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू अवॉइड फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल. ठीक है, इसी की बात हो रही है, अब एक रिपोर्ट है. ठीक है, तो यंग पीपल जो है इन कंट्रास्ट डेली वेज वर्कर ना 20 to 29 एजुकेटेड अप टू 12th हैव लोएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. जो 20 से 29 साल का लड़का है, खास करके वो जो कि क्लास 12 तक पढ़ा, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी उतना नहीं है, उतना समझ नहीं है ना. सो दैट इज व्हाई दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, जो कर्ज देने वाले हैं, तो उससे ज्यादा सूद ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, तो इसी को आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें डिटेल नहीं जाना है. देखो ये ग्राफ वगैरह बना है, इतना याद नहीं रखना. ठीक है, कंसर्न्स अबाउट इंडिया US डिजिटल ट्रेड, इसको आप चाहो तो पढ़ लो. बट जैसे इसमें वन थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है, ISET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, अभी मैंने बताया ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा एंड ऑल, है ना. सो इस पर एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है. ISET इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ये न्यूज में चल रहा है ISET. ओके,
initiative on critical and emerging technologies. Please read it because this is an initiative between US and India. हो सकता है इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल हो, सो यूएस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडिया, सो इट वुड बी हेल्पफुल एंड ऑल. ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि जेट इंजन बन रहा है ना, जनरल इलेक्ट्रिक्स का हाल के साथ. सो दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसफर एट टेक्नोलॉजी वुड बी वेरी बेनिफिशियल एंड ऑल, है ना. तो इसी सब की, तो इसको आप पढ़ लेना, मैं वेबसाइट भी यहाँ पे लगा दिया हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज द क्लास एंड रीड इट, है ना. सो यू शुड बी गोइंग थ्रू इट, है ना. अब देखो इसमें क्या है. हाँ, एक चीज जो सबसे बड़ा इशू बना था 2021 में था आईटी रूल्स 2021, है ना. So a lot of issues happened because a lot of, I think there was some conflict with Twitter also in this regard. They were not, I mean, regarding following IT rules and all. अब मैंने इसको कल ही डिस्कस किया था, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज SMIs, है ना. मैंने बताया भी था कि if they have more than 50 lakh followers, they will be called as significant social media intermediaries. एक और S आगे लग जाएगा, है ना. So these things we have discussed. तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाया था गवर्नमेंट ने, IT रूल्स 2021. And this rule was under IT Act 2000. Okay. So these rules were made, but there were some issues with the government, with Twitter and all. They were not willing to follow and all. तो इसीलिए इसको बात किया जा रहा है. That is what is being discussed and all. इसीलिए ये हेडलाइन है. देखो हेडलाइन क्या है. Concerns about India-US digital trade, है ना. Because there were some issues and all in this regard. ठीक है. Okay. खैर. Sedition law must to retain India's integrity. I hope you are aware. Justice Ritu Raj Ravasti, मैंने बताया, he is the chairman of Law Commission 22nd, the latest Law Commission, and he supported that sedition should remain. Okay. And he is the chairman of this, है ना. So section 124A IPC, है ना. He is talking about that. So he is defending it, that it is important for India to retain its integrity and all. Okay. Yes. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.